के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है, वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी, ये एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और सातवें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत हैं पर नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया। Good afternoon, everyone. Thank you for joining us on this webinar of Business Opportunity Over Chai. Business Opportunity Over Chai is presented by the management of Franchise India with an aim to introduce you to the new business opportunity every day at 12 o'clock. In 2024, we continue to introduce you to new brands and new business opportunities. Today, we are going to introduce you to a new brand whose focus is on skill development and value-driven training to the farming community in India. But before I introduce about the brand, let me just run you through the Q&A process. If you have any questions during the webinar, please type your questions in the Q&A box. We'll take up all your questions post brand presentations. While we run you through the presentations and brand details, request you to keep sharing your queries into the Q&A box to make this session more interactive. Our today's brand is AVPL. Till date, AVPL has enriched the lives of 1 lakh farmer families with market relevant training that has augmented their income and enhanced their lifestyle. AVPL is looking for partners for their WSIH locations in UP. We have Mr. Bhavneet and Ms. Shweta from brand. Along with me, we have Mr. Gaurav Arora and Mr. Mohit Bansal as our panelists. Now I invite Mr. Bhavneet and Ms. to share their insights about the brand. Sure, let's begin. Shweta, can you please share the screen? I hope our screen is visible. Yes. Yeah. So, hi, good afternoon, everyone. My name is Bhavneet. I am AVP Strategy and Operations at AVPL International. I am here to present a partnership proposal for our World Skill and Incubation Hubs. So, before diving into the proposal, let's understand what AVPL does and the complete background of these World Skill and Incubation Hubs. So, what AVPL does is AVPL is a market leader in drone manufacturing, drone training, and sponsored skill development training ecosystem. Till now, we have successfully trained 1 lakh plus candidates and have a total of 70 centers, 50 global skill and incubation hub across 12 states, which we are currently running, and 20 world skill and incubation hubs in the state of Uttar Pradesh, for which this proposal is. Our key partnerships include IIT Kanpur, IFCO, UP government, Haryana government, and UK government. Moving further, let's discuss each avenue that I have talked about. First one is skill development courses. So these are sponsored skill training programs that are free for the candidates, and the government pays us per candidate fees based on pay categories defined by the government. For the past 8 years, we have been one of the largest training partner of the government, and the majority of our revenue comes from this segment till now. Next one is drone trainings. We are DGC approved remote pilot training organization with RPTOs currently in the state of Haryana and 4 more under development across 2 more states. Till now, we have trained 300 plus drone pilots who have successfully received jobs in agriculture and various other fields. The third one is agri entrepreneurship.
Our vision is to create village level entrepreneurs who will sell all the agri inputs that go into farming through a knowledge center known as Farmer City Mart. Fourth avenue is manufacturing. We have entered into drone manufacturing for the past 1 year. Our drone name is Viraj, and it is the only drone in India which is not only DGC approved but also EASA approved. EASA is European Union Civil Aviation Safety Agency. So Viraj has features like day-night spraying, master slave configuration, and extended range of 1 kilometer, and many more. Last one is drone as a service. We have received the biggest work order in India from IFCO to spray 50 lakh acres of land across 8 states, which we are set to execute. Moving forward, moving forward, let's see how we have grown, not just in terms of revenue, but Bhavneet, also. am I Hello. audible? Yeah. Yeah, In audible. the interest of the audience, we'll make it a little English webinar so that जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है सबको हम बेसिकली अपने साथ एंगेज कर सकें. Right? Sure, So sure. let's make it a combination of Hindi and English. Thank you. Okay. So moving forward, let's see how we have grown, not just in terms of revenue, but also in terms of new venues. So 2021-2022 में we had 60 centers where we ran sponsored training programs specifically dedicated to farmer family and उनके family members. And through that we generated a revenue of 11.2 CR. In the next year, we had 11 centers where we added new schemes and new job roles which are more in demand, like battery service technician, social media influencer, and added a new scheme of government known as DDU-GKY and expanded to 11 centers, generating a revenue of 22 crores. In previous year, we operated 20 centers. While doing all this, we added two more segments to it: PM Vishwakarma scheme and one is drone trainings in RPTOs, as I mentioned, जहाँ पे हम अभी तक 300 pilots को train कर चुके हैं अपने 4 RPTOs में, generating a revenue of 44 crores. So what about this year? Current year, we expanded to 50 centers with these training programs and added two more segments, drone manufacturing and drone as a service. अब जब हमारे पास in-house drone manufacturing आ गया, तो we added a segment of drone as a service because as I mentioned, we have received the largest work order from IFCO to spray 50 lakh acres of land. तो इस work order को पूरा करने के लिए हमारे पास ड्रोन पायलट्स ऑलरेडी हैं जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं और ड्रोन हम इन हाउस बना रहे हैं. So this is what we are completing a loop through manufacturing, then training, then providing the job. So, but why are we mentioning 70 locations then? Recently, we took over 17 ITIs and 3 polytechnics from the government of India to run exclusively on triple P mode. So, हमें ITIs और polytechnic की condition पता है कि most of the ITIs and polytechnics are loss making and which does not make an impact towards skill development actually. So what we did was we collaborated with NSDC and NSDC International and formed a complete model for these 20 centers, like what all trainings will be done, how this will be done, and what will be done. So these centers are known as World Skill and Incubation Hubs, for which we all are here to present the proposal. So अब ये World Skill and Incubation Hubs क्या है? ये हम आपको बताता हूँ मैं. These are government buildings of ITIs and polytechnics with a sprawling area of 50 से 60,000 स्क्वायर फीट का एरिया है इनमें और ओपन एरिया है 2 से 3 एकड़ लैंड. सो अलोंगसाइड ट्रेडिशनल ITI courses, our focus will be on courses like drone technician, drone pilot, along with international placement opportunities in collaboration with NSDC International. So if you can see, the further there is the locations that we are present. These are the major districts of UP in which World Skill and Incubation Hubs are located. And in the next slide, you can see the glimpses of how these hubs look like. These are new government buildings. सारी नई बनी हुई हैं. पहली बार इसमें कोई काम start होगा. And these are all new buildings that you can see. And moving on to the next slide, you can also see the branding that we have planned in collaboration with NSDC. And we have all the required permissions for this branding. Shweta, if you can play the video. Yeah. So moving on to the proposal part now. Now हमने एक बार बैकग्राउंड समझ लिया हम करते क्या हैं, वर्ल्ड स्किल इंक्यूबेशन हब इनको हम क्यों बोल रहे हैं. अब आते हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं इस वेबिनार के थ्रू. So we are not looking for funds or investors. We are looking for partners who can operate these world skill and incubation hubs. Our ideal
Partner profile includes entrepreneurs willing to enter into this sector, academicians, educationists, and any person ready to learn and operate these hubs with us. So what we are proposing is the partner comes with an initial investment of 5 crores, which includes 4 crores of capex for the complete setup of these hubs and 1 crore of partnership fees. This 5 crore will be in the form of EMD, which will be refunded to the partner in 3 years with an annual ROI of 30%. So the annual revenue that we are assuring from a world scale and incubation hub is 10 CR. सो ये कोई रैंडम नंबर नहीं है ऑप्टिमिज्म में जो हमने डाल दिया प्रोजेक्शन में, बट ये नंबर वो है जो एनएसडीसी के साथ बैठ के हमने ऑफिस में जाके डिस्कस करके बनाए हैं 3 सिनेरियोज में, बेस्ट, आइडियल और वर्स्ट, बेस्ट केस, आइडियल केस एंड वर्स्ट केस. तो हमने जो मिनिमम अश्योरेंस हम दे रहे हैं एक पार्टनर को, वो हम वर्स्ट केस के हिसाब से प्रोजेक्शंस दे रहे हैं. तो अब इसमें क्या होगा, रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होगी? 30% of this 10 crore will be AVPL share and the remaining 70% would be the partner share, which is 7 crores. So the most interesting part comes here that AVPL will be executing these numbers, defining SOPs and providing training to partners by hand holding them. So पूरे 2 साल के लिए AVPL ये numbers execute करके देगी, उसको achieve करके देगी, and this is a minimum guarantee that we are offering to the partner for the first 2 years because एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लेना चाहते हैं और उसके थ्रू हम पार्टनर्स को वहां पे साथ साथ ट्रेन करेंगे, एसओपीज डिफाइन करेंगे, प्लस उनको कंप्लीटली सेटअप करके देंगे विद वर्क ऑर्डर्स आगे के लिए. So this is what our model is. So let's see how the investment versus ROI looks like. The most interesting part, a partner looks or an investor looks at the ROI that we are generating. So as discussed, the minimum revenue generated for the partner for the first 2 years is 7 crore, which would be used to cover the operational expenses first of 3 crores. Then the complete breakup of these operational expenses you will see moving further. Then, after covering the operational expenses, the 5 crore that partner has invested will be returned in 3 years. So 33% of that 5 crore is 1.67 crores plus an annual ROI of 30%. Because अगर कोई कुछ लगाता है तो उसको पहले तो प्रिंसिपल वापस चाहिए होता है, प्लस उस पर एक रिटर्न चाहिए होता है. तो हमने प्रिंसिपल वापस कर रहे हैं हम 3 साल में, प्लस उसको 30% जो उसने साल भर में लगाया उसका ROI दे रहे हैं. तो ये सब निकालने के बाद वी आर सेटिंग अ कॉर्पस ऑफ 50 lakhs फॉर मिसलेनियस एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस. सो द पार्टनर मेक्स 3.5 crores in the first year itself. Moving forward for the second year, the same mechanism applies and the partner gets 3.5 crore. So if we assume a constant revenue of 7 crores also, partner is making profit with break even in the second year itself. So from the third year onwards, how will the things change? So AVPL will get the complete work orders from the third year also. Complete work orders will be there on the name of AVPL and we will be getting them. But the responsibility of executing these numbers would be on partners. And revenue sharing will be same. The post OPEX revenue will be shared in the same ratio. I know this might sound complex, but this is the most prominent deal with break-even and profit from the second year itself. And I will share these collaterals in detail, and you can visit them. And उसके बाद हम डिटेल में बात कर सकते हैं. तो अगर आप देखें नेक्स्ट स्लाइड में, ये जो 4 करोड़ का केपेक्स का ब्रेकअप है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये हमने पूरा दे रखा है. अब ये केपेक्स का ब्रेकअप हमने जॉब रोल वाइज निकाला है. जो भी हम जॉब रोल क्या होते हैं, जो भी हम कोर्सेज कराएंगे, चाहे वो ट्रेडिशनल आईटीआईज की हों, चाहे वो हमारे शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग्स के हों, चाहे वो हमारे पीएम विश्वकर्मा स्कीम के हों, या फिर हमारे जो ड्रोन ट्रेनिंग से हो, उसमें एक इक्विपमेंट्स लगते हैं. उसका केपेक्स जो हमने डाला है दैट इज समड अप टू द 4 करोड़ नंबर. इसके नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि जो हमने एनुअल ओपेक्स बोला है उसका कंप्लीट ब्रेकअप आपको दे रखा है. 25 लाख रुपीस पर मंथ के हिसाब से हमारा क्या ओपेक्स लगेगा, कितने हमारे एडमिशन के लिए मोबिलाइजर्स लगेंगे, कितने रिसेप्शनिस्ट लगेंगे, कितना हमारे इंस्ट्रक्टर्स लगेंगे, how much salary they will take, rent, electricity, each of the component we have taken into account and have reached to this number of 3 crore, which is and इससे कम ही होगा ओपेक्स, इससे ज्यादा नहीं होगा. हमने वैसे नंबर लेके चले हैं, चाहे हम सैलरी की बात करें चाहे रेंट की बात करें. So this is what we are proposing, and thank you for being a patient listener. We are now open to questions and discuss further.
Hi, thank you for this detailed presentation. We have learned about this government project and the kind of good which you are doing to the farmer community. We'll take questions one after another. So first of all, I would like to ask Gaurav and Mohit to give your insight about the brand a bit. So, hi, thank you, Bhavneet, for giving this detailed insight. And I'm sure the audience who is listening us, viewing us, have got the clear understanding कि ये business model क्या है, ये opportunity क्या है, क्या उनको invest करना है, किस तरीके के resources लगने वाले हैं, company के roles and responsibilities क्या हैं, franchisee level पे उसके roles and responsibilities क्या हैं. But फिर भी I welcome the question and answers. So audience, आप हमें सुन पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं. Please feel free to put your questions in the Q&A box. आपकी screen पे Q&A box है, click करिए, put your question, right? So that we basically can help you to more understood and more learned about the model, and we can probably help you to take it to the closure stage. आप इन्वेस्टमेंट से मत डरिए, क्योंकि होता क्या है ना, बिजनेस में आज 15-16 साल हो गए मुझे काम करते हुए. I've seen people that they fail to take risk in their life, right? Because they're not sure about the brand, they're not sure about the opportunity. But यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये जितना भी पूरा सेटअप है जो AVPL ने बनाया है, आई एम श्योर हम सबने सुना है ध्यान से, ये पूरा सेटअप इन्होंने गवर्नमेंट के साथ बनाया है. इसमें उनके साथ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली इनके साथ इन्वॉल्व है. तो एक क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस का कि डायरेक्ट टाई अप है किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का, तो अमित जी आप इसको कैसे एड्रेस कर पाएंगे सो दैट द ऑडियंस कैन गेट द मोर कॉन्फिडेंस ऑन द टाई अप दैट यू हैव विद गवर्नमेंट. सो डायरेक्ट टाइप्स हमारे NSDC के साथ हैं एंड NSDC इंटरनेशनल के साथ हैं, जिनके साथ हमने बैठ के ये पूरा मॉडल बनाया है. प्लस डायरेक्ट टाइप्स हमारे पिछले 8 साल से वी आर प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग्स. तो यूके गवर्नमेंट जो है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट, HSDM हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन के जो पार्ट है गवर्नमेंट, एंड यूपी गवर्नमेंट, इन तीनों से हमारे डायरेक्ट कनेक्शंस हैं फ्रॉम वेयर वी गेट द वर्क ऑर्डर्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर एवरी ईयर. ग्रेट. इसका मतलब गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, डेफिनेटली खड़ी है. आपकी सिर्फ एक बार ही इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसके बाद रेकरिंग आपका कोई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है. कंपनीज गिविंग यू मिनिमम गारंटी ऑफ बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस. उसके बेसिस पे आपको एक सर्टेन इनकम की गारंटी हो रही है. सो इफ यू हैव अ कॉर्पस, और इवन इफ यू डोंट हैव अ कॉर्पस एट योर ओन, आप उस कॉर्पस को अगर अपने साथ एक सिंडिकेट बना लो कि 2-3-4 लोग आप मिलके एक फ्रेंचाइजी ले लेते हो, GSIH की या फिर आप WSH की लेते हो, तो आपके लिए फायदा क्या है कि डे 1 से आपके लिए इनकम आनी शुरू होती है और कंपनी उसमें आपको एक मिनिमम गारंटी दे रही है, व्हिच मींस कंपनी इज मोर कॉन्फिडेंट विद देयर almost a decade of experience of having doing this business, that they are going to get the certain number of admissions and they are going to give you the yield against the investment that you are putting. And I'm sure that all of us would have gone through, and I request Shweta to again display that screen. We have actually given you three different cases of our businesses, which means we have got a best case, we have got a worst case, we have got an ideal case. In either of the cases, when we put our numbers, there is something that we are getting as a basic income against the capital that we have invested, which means our income is secure, our capital is secure, and obviously our ROI is secure, our payback is secure, right? लेकिन इसके लिए भवनी थोड़ा सा मैं आपको चाहूंगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, if you can give a little more understanding and confidence कि basically ये numbers achieve कैसे हुए, what all marketing initiatives as a company you have in your mind and you've taken in past, which has actually given you this confidence. Exactly. So that you are and you are basically transmitting it to the audience. आप उनको एक ये audience जो बैठी है हमारे साथ, आप इसको ये ट्रांसफर कर पा रही हो कॉन्फिडेंस. इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप मुझे बताओ, क्योंकि वो हमें बहुत हेल्प. बिल्कुल. सो हमारे बिजनेस का मेजर पार्ट है बच्चों के एडमिशन लाना, which is mobilization. So that is our expertise from the past 8 years. तो हमने WSIH के लिए क्या प्लान करा है, because 50% of the programs, if you see, are government sponsored and rest 50% are paid. So there will be a complete support from the local authorities in executing these events. Plus हमने इनॉग्रेशन इन 20 लोकेशंस का कैसे प्लान करा है. सो टॉप लेवल मिनिस्टर्स, DCs, DMs सारे लोग वहां आएंगे, एक साथ इसका इनॉग्रेशन होगा, एंड दिस इवेंट विल डायरेक्टली क्रिएट द PR वी रिक्वायर फॉर द आउटरीच, बिकॉज ये मीडिया भी फ्री में कवर करेगा बिकॉज गवर्नमेंट इन्वॉल्व है. तो ये एक बहुत मेजर स्टेप होने वाला है जो हम जाते ही उसको एक्सप्लोर कर देंगे, यू कैन से दैट मार्केट को, because of our PR strategy. And talking about the mobilization, we have trained over 1 lakh candidates
and we will deploy a dedicated team of mobilizers and outreach coordinators जिनके साथ एक काउंसलर भी जाएगा, विलेज टू विलेज डोर टू डोर कैंपेन चलेंगे एंड वो फैमिलीज एंड फैमिली मेंबर्स और जो रिस्पेक्टफुल फिगर्स होते हैं जैसे विलेजेस में एल्डर्स हो गए, पंचायत लीडर्स हो गए, उनके थ्रू हम रीच करेंगे पेरेंट्स के बच्चों के। और सिर्फ बच्चे ही नहीं और उनके पेरेंट्स के लिए भी स्कीम है, बिकॉज हमारी पीएम विश्वकर्मा जैसी स्कीम्स ऐसे ही लोगों के लिए हैं जो हाथ से काम करती हैं, जो लेबर, उनको सर्टिफाई करते हैं 7 डेज की ट्रेनिंग के थ्रू। सो उनके पेरेंट्स को भी वो ट्रेनिंग करवाएंगे एंड उनके बच्चों को भी। प्लस सबसे बड़ी बात हमारा बेनिफिट ये है कि 50% गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, तो फ्री की चीज है। इंडिया में एक बहुत कहावत तो नहीं लेकिन एक बहुत ही अनसेड रूल है कि फ्री का कोई भी कुछ भी दे रहा हो ना तो ले लेते हैं। अगर कोई जहर भी ले रहा हो तो रख लेते हैं कि बाद में देख लेंगे, ले लेते हैं, मिल रहा है। तो ये फ्री की ट्रेनिंग्स के लिए बच्चे लाना इज आवर एक्सपर्टीज एंड विच वी आर कॉन्फिडेंट दैट दीज नंबर्स विल बी अचीव्ड। दूसरी चीज मैं भवनीत ये जानना चाहूंगा कि आज आपने अपने कुछ ऐसे आईटीआईज हैं, कुछ पॉलिटेक्निक्स हैं जो आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जहां पे गवर्नमेंट ने आपको डायरेक्टली एक्सेस दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है, राइट? It's like a brownfield project where it's just a plug and play kind of a business solution that you are giving to the people who are coming as an investor. Right. अब ये कैसे हुआ है कि यही पॉलिटेक्निक्स को या आईटीआईज को, is there some kind of a demography study that we have done with government of that state or that तालुका या डिस्ट्रिक्ट या रीजन की, कि यहाँ पे कितना अनएम्प्लॉयड हमारे पास जो है वो एक आज यूथ है जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं? बिकॉज आई एम श्योर दीज नंबर्स दैट यू हैव वर्कड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें कुछ तो ऐसा होता होगा ना जो बैकएंड पे आपको प्लानिंग में हेल्प करता हो। तो वो कैसा प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट या कैसे आपने आइडेंटिफाई किया हो? तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे एक स्कीम होती है पीएम विश्वकर्मा, एज आई मेंशन्ड, उसके लिए गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसपे आप अगर लोकेशन का फिल्टर लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस स्कीम। बेनिफिट ये होता है इस स्कीम के लिए हमें जा जाके लोगों को बताना नहीं है, बल्कि ऑलरेडी एक पोर्टल है जिसमें रजिस्टर कर रखा है लोगों ने। सो आवर टीम ऑफ काउंसलर्स विल हैव टू कॉल देम एंड टेल देम कि हमारे सेंटर में आओ, यहाँ पे आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, प्लस ये इंसेंटिव मिल रहा है, आपको पूरा एसी में बैठ के पढ़ाया जा रहा है, टूल किट मिल रही है फ्री में, ये मिल रही है। तो वी हैव चेक ऑल द नंबर्स रिलेटेड टू दिस स्कीम इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स। प्लस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के गवर्नमेंट के पास टारगेट हैं एंड उनके टारगेट होते हैं 50 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेन करना थ्रू आउट द ईयर। तो दैट इज ह्यूज एंड इस यूपी में काफी बड़ी मार्केट है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की, बिकॉज आईटीआईज एंड पॉलिटेक्निक्स काफी लॉस मेकिंग चल रहे हैं अभी। लेकिन हमने जो एलिमेंट्स ऐड करे हैं उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का और अपने साथ जो क्रॉस चैनल एलिमेंट्स ऐड करें, दैट इज सबसे बड़ा हमारा सेलिंग पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पे, इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स। क्योंकि एक यहाँ पे कैंडिडेट सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आएगा उस रिस्पेक्टिव वेल्डर या फिटर के कोर्स को, बट फॉर द इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स दैट वी आर सेइंग एंड कोलैबोरेटिंग विद एनएसडीसी इंटरनेशनल, जिसने 18 कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट कर रखा है। तो सबसे बड़ा कैच होगा इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स। फॉर दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग लैंग्वेज क्लासेस, वहाँ पे लैंग्वेज क्लासेस बोथ इंग्लिश में भी और जिस भी कंट्री में हमारे लिए वर्क ऑर्डर आएगा स्पेसिफिक टू दैट। तो ऐसा हमने पूरा प्लान करा था। That's great. That's really wonderful, which means you have actually dived into it and designed the entire program for the acquisition of students. Now, so having heard about the acquisition strategy, we would also like to know about the content, the delivery mechanism, how that is going to be planned. किसने ये curriculum design किया है, कैसे ये curriculum execute होगा, and how relevant it is according to the industry standards. Because we've seen all the private colleges in our country are basically just the degree providers. Right? Most of the students, even doing mechanical or a civil, are getting an IT job and they probably have to start from coding, which is like a bottom of the pyramid, right? Exactly. And they get about 3-4 lakh rupees and they pay 10-15-20 lakh rupees for their graduation. So if you look at the ROI versus the investment, that's very, very poor. I mean, they get their ROI of their capital invested in the education in, let's say, 3 to 5 years. Though there is a growth path ahead because they have to keep updating themselves. But these are the privileged, right? They have some kind of backup of their family, friends, and they get loans. But this, I'm sure it is not meant for people who are privileged, but also for people who are aspirant, who are worthy enough to be taught, right? Who are worthy enough to be taught. So, आप कैसे justify करते हो अपनी education को, अपने content को, अपने delivery को, and how do you make sure that the jobs are there for them after having gone through the training and courses from you?
तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है गौरव जी, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक बंदा यहाँ पे ट्रेडिशनल आईटीआई कोर्सेज के लिए नहीं आएगा, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, डेफिनेटली उसकी एक मार्केट है अभी भी एंड उसको पढ़ के लोगों की जॉब्स लगती है, बट दैट इज मोर टुवर्ड्स द इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स लगती है. बट हाउ वी हैव कन्वर्टेड दिस टू द फॉर्मल सेक्टर विद आवर लैंग्वेज क्लासेस, विद आवर इंटरनेशनल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, with our futuristic courses like drone technician, drone pilot training. So drone आजकल drone is the future. If you understand that agriculture में drone का जितना यूज गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है उतना कोई भी प्राइवेट प्लेयर अभी तक अचीव नहीं कर पा रहा है. So there is a huge white space related to drone trainings and drone as a service. So हमारा सेलिंग पॉइंट ड्रोन एज अ सर्विस, ड्रोन टेक्नीशियन एंड हमारा इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स रहेगा, जिसके थ्रू बच्चों को ना सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ उनको जॉब रेडी बनाएंगे. बिकॉज एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया वगैरह में काफी एग्रीकल्चर ड्रोन्स जो पायलट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, एंड फॉर दैट वी विल गेट डेफिनेटली द वर्क ऑर्डर फ्रॉम एनएसडीसी इंटरनेशनल. वी आर कॉन्फिडेंट. एंड डे 0 से लेकर डे 365 तक हमने जो जो काम और जैसे जैसे काम करेंगे दैट इज कंप्लीटली प्लान्ड. सो मैं आपको अगर एक ब्रीफ दे दूं, डे 0 पे हमारे पेड डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, पीएम विश्वकर्मा स्टार्ट हो जाएगा. ये दो स्कीम्स हमारी स्टार्ट हो जाएंगी. इसमें पीएम विश्वकर्मा जो है वो मैंने आपको समझाया, एक 5 डे की ट्रेनिंग होती है जिसमें कैंडिडेट्स को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती. कैंडिडेट्स आर ऑलरेडी देयर इन द पोर्टल. उनको बेनिफिट मिलता है, रोज के उनको स्टाइपेंड मिलता है, प्लस उनको एक सर्टिफिकेशन मिलता है कि यस ये कारपेंटर इज वर्दी ऑफ दिस गवर्नमेंट सर्टिफिकेट. सो ये स्कीम है. Day 30th, day 60th पे we have planned for competitive exam preparation and short term skill training. How we have defined these days is because we have experience in working with government, तो हमें पता है कौन सी लाइसेंस को मिलने में कितना टाइम लगने वाला है. तो हमने शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग इसीलिए डे 0 पे नहीं रखा, बिकॉज 60th डे तक हम वो सेटअप करेंगे पूरा, जो भी हम वहाँ पे 6 जॉब कोर्सेज चलाएंगे तो उसको सेटअप करने के लिए प्लस लाइसेंसिंग लगेगी, प्लस ब्रांडिंग हमें रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी इस एसटीडी की. तो ऐसे हमने पूरा प्लान बना रखा है जिसके थ्रू विल मूव फॉरवर्ड. एंड देन एट लास्ट डे 90th पे हमारे फार्मर सिटी मार्ट और ड्रोन प्लैनेट खुलेंगे, विच इज लाइक ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्लस एन अर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर द कैंडिडेट देन एंड देयर. बिकॉज फार्मर सिटी क्या है, एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फार्मर जो इनपुट्स होते हैं, एग्री इनपुट्स, उसको बेचोगे, उसको उस पे कमीशन अर्न करोगे. तो दिस इज लाइक ओजीटी. वी कॉल दिस एज फार्मर सिटी नॉलेज सेंटर. एंड ड्रोन प्लैनेट क्या है? ड्रोन प्लैनेट इज लाइक अ क्रोमा फॉर ड्रोन्स, वेयर वी विल सेल आवर ओन ड्रोन्स आल्सो, एंड दूसरों के ड्रोन्स भी बिकेंगे वहां. ड्रोन डेस्टिनेशन गरुड़ा, सबके ड्रोन्स बिकेंगे. एंड दिस विल बी लाइक वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ ड्रोन हब, जहाँ पे आपको सेल्स पे कमीशन प्रोवाइड दिया जाएगा कैंडिडेट्स को. तो ये भी एक वे है अर्निंग का साथ साथ पढ़ाई के. एंड इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स तो है ही. लास्ट में विल आइडेंटिफाई whom of how much of the candidates are worthy and उनको किस लैंग्वेज में ट्रेन करवाना है, प्लस उस पर्टिकुलर स्किल में ट्रेन करवा के उनको इंटरनेशनली प्लेस कराएंगे. Great. So, I would like to reiterate for the audience. आपने बेसिकली गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया, इंस्टीट्यूशंस की पूरी प्लानिंग करी, आपने आइडेंटिफाई करे गैप एरियाज क्या है, उसके हिसाब से आपने पूरा एक कंटेंट करिकुलम टीम एक अपनी पूरी सेटअप करी, कंटेंट डिजाइन किया, उसको आपने इंडस्ट्री रेलेवेंस के हिसाब से चेक किया, उसके लिए पूरे आपने मॉड्यूल्स बनाए हैं. और अब जब जैसे जैसे एडमिशंस होंगे तो इनकी फीस जो है, जो हम बिकॉज इनकम विल बी कमिंग फ्रॉम दी स्टूडेंट्स, राइट, एडमिशंस इज टेकिंग प्लेस. तो हमने जो यहाँ पे फीस डिफाइन करी है, राइट, पर चाइल्ड पर एनम बेसिस या पर कोर्स बेसिस या पर सर्टिफिकेट बेसिस, तो वो हमने किस तरीके से डिजाइन करी है? वो गवर्नमेंट पे करेगी या वो बच्चा पे करेगा या फिर वो सब्सिडाइज्ड होगी? किस तरीके से वो डिजाइन होगी? उसके अलावा जो ये टर्म ऑफ द कोर्सेज होंगे वो किस तरीके से इसके अंदर डिजाइन? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ. इसमें से जो 50% हमारी ट्रेनिंग चलेंगी वो चलेंगी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, जो कि मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग, पीएम विश्वकर्मा एंड सम पार्ट ऑफ आरपीटीओस, क्योंकि आरपीटीओस पेड भी होते हैं, गवर्नमेंट भी कराती है. तो इसमें पैसा हमें देगी पर कैंडिडेट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का पेमेंट देने का लाइफ साइकिल रहता है 180 डेज का, एंड इट पेज इन 3 tranches, 30, 40 and 30, on the basis of some conditions that we need to fulfill about admission and the attendance criteria. तो 50% तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है. रेस्ट 50% में आ गया हमारा पेड डिप्लोमा कोर्सेज जो आईटीआईज के हैं. इसमें हमारी फीस रहती है 18,000 से 20,000 जो कैंडिडेट पे करता है. एंड दिस नंबर इज डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट. चाहे आप कोई भी जॉब रोल चला लो, आप ड्रोन का चला लो या फिर आप कोई भी फैशन डिजाइन का चला लो, लेकिन आप 18,000 से ज्यादा फीस डिमांड नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज अ मैंडेट बाय गवर्नमेंट.
and rest other competitive exam and RPTOs, student will be paying us directly. And because the term, in the second question that you asked, the term of these courses, it depends. The courses vary from 3 months to 12 months. And diploma courses, as you know, for ITIs, वो 1 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं. Okay. So which means we have a short-term course and going up to about 12 months course. तो एक बच्चे की हमारे पास जो ओवरऑल जो उसका स्टे रहेगा वो 3 महीने से लेके 12 महीने तक का रहेगा. This is what we are saying. बिल्कुल. And paid diploma courses में definitely. जो फैकल्टीज आप करोगे, जो ट्रेनर्स आप अपॉइंट करोगे, वो ओनरशिप किसकी रहेगी? वो आपकी रहेगी या फिर उसमें गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस है? और उनकी सैलरीज कैसे? हाँ जी, ओनरशिप हमारी रहेगी और ट्रेनर्स डिप्यूट ऑलरेडी हो चुके हैं. हमारे 20 में से आई वुड से 10 लोकेशंस पे ट्रेनर्स हायर हो चुके हैं फॉर ऑल दीज ट्रेड्स, एंड कंप्लीट रिस्पांसिबिलिटी हमारी रहेगी. गवर्नमेंट इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं रहेगी, बिकॉज दिस इज वी आर रनिंग इन ट्रिपल पी मोड, पब्लिक प्राइवेट. तो हमें ये प्राइवेटली ही चलाना है. बस हमें फीस का ध्यान रखना है कि वो गवर्नमेंट के मैंडेट से ज्यादा नहीं लेंगे. और सैलरी स्ट्रक्चर आप कैसे डिफाइन करते हो? दैट इज आल्सो डिजाइन बाय या फिर सैलरी स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से ही है. गवर्नमेंट उसमें भी इंटरफेयर नहीं करती, बट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इफ वी लाइक एन इंस्ट्रक्टर वी कैन इंक्रीज. इट इज अपॉन अस, बट हाँ वो स्टैंडर्ड सेट है थोड़े गवर्नमेंट के. उससे ज्यादा, उससे कम नहीं दे सकते, उससे ज्यादा दो तो वो आपके ऊपर है. Okay, great. So I'm sure our dear audience who has been with us on the screen today, and I can see that there is not even a single drop of 30 people who have joined us as an audience today. They are actually consistent with us and they are viewing us, which means that it seems to be interesting for them. They're learning about the opportunity. So we have discussed about the complete linear equation in this business. So it is basically a PPP project. I'm reinforcing and reiterating for all the audience who can talk now. So it's a linear process that we have designed. Am I audible? Yeah, you're audible. All right. So we have already the infrastructure in place. We have courses in place. We have got common tie-ups. We have got the content, curriculum, delivery, fee structure, everything designed according to the government norms. Though the company has been doing business in last, a company has been doing business for over a decade now, but now we have come up into franchising for the very first time, where we are giving this opportunity, right, for investors to join hands with us and become the edupreneurs, right? We are not calling them entrepreneur. They are going to be edupreneurs. And they are going to be only investing in the business in the initial phase. They'll be working. Entire working will be done by the AVPL and the team. The investor is going to get the yield against the capital that they've invested, which is going to be basically a 2 years to 3 years payback. And it is going to be a long-term agreement, and they will continue to get their sum as long as the business is going to sustain. And mind you, my friends, this is basically a PPP project where we are going to be nurturing the youth of our country, which is based not in a privileged conditions, right? They are not in the privileged conditions. So it's not just the company that you're going to earn out of it, but also a lot of recognition. Yeah. To add on to this, I like to say there's also the recognition that you're going to get because you're going to be working for Government of India under the PPP project, and I'm sure this will help you to develop your relation with Government of India, and you will do something which probably is not done by a lot of people. It's a value addition for the society, and money is a byproduct. So thank you so much, Bhavneet. I'm sure people who have heard us, people who have learned about this opportunity have got a very detailed insight. We, on the behalf of Franchise India, I request that I request that you share your details and give us a time where we can connect you with the audience who would like to now meet with you or learn from you on a one-on-one basis, and whatever queries and unclear points that they have, they can probably learn it from you. So Sandeep is going to share the details of our contact number and our email ID, and Mohit Bansal is going to be the main point in contact. So, I have one query which I have received from one of the partners and some investors. Definitely. Is that Mr. Vavneet, I would like to share one query before we end this call. That query is, we have talked about the WSIH locations for which we are looking for partners, right? So, if we can probably talk about those WSIH locations, Am I audible?
Yes, you're audible. You're audible, Mr. Bhavneet. Hello. Okay. Question because the internet was not working actually. Your voice broke down. Yes. So, Bhavneet, yes, I Hello. was talking about these locations because these locations are very important. We have people joining from multiple places. So, these are the locations for which we are looking for partners for AVPL. So, if you want Yes. to talk about these locations a bit, Mr. Bhavneet. So these are the core districts of UP, and there's a huge market for all the free short-term trainings that we have told, and also we have hired a third-party inspector who is visiting each and every location, and हर location पे उन्होंने identify करा है कि हर location के आसपास 3 गांव तो ऐसे हैं जहां तक कोई ITIs और कोई पॉलिटेक्निक्स नहीं है। तो वहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम ऐसा प्रोग्राम निकाल रहे हैं जिसको हम आईटीआई नहीं बोल के वर्ल्ड स्किल एंड इंक्यूबेशन हब्स बोल रहे हैं, लेकिन फीस हम आईटीआई की ले रहे हैं और ब्रांडिंग हम मिनिस्टर से करवा रहे हैं, पीआर हम मिनिस्टर से करा रहे हैं। तो कहाँ से बच्चे नहीं आएंगे? इन सब लोकेशंस में वी हैव आइडेंटिफाइड। सबसे बड़ी बात, बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, तो अभी तक इस पे कोई काम हुआ नहीं है। पहली बार कंस्ट्रक्ट करके सीधा हमें दी गई है ट्रिपल पी पे रन करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इन लोकेशंस पे। Great. And there is another query which I wanted to understand is the basic course fee or the duration of the courses. So, whether we are looking for any particular kind of a students who have a particular background. So that also I wanted to know. No, so we are not looking for a particular background. So our short-term courses, if I tell you the name of our short-term courses, they include courses like battery service technician, agri input dealer, and social media influencer. So drone technician, drone pilot. So these are the in demand job roles which will, so 0 to 1 है कोचिंग, इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपको आना ही चाहिए पहले से। So this is also one of our major advantage for our courses. So does it mean that any prerequisite qualification is not required? Somebody has to be a 10th pass or a 12th pass or anything like that before taking up these courses? So so before taking up short-term training, there are few mandates, but it differs according to the courses. For few courses there are no mandates, but for few courses there are. So it differs. We cannot say that for every course there is no mandate. Okay. And if you can talk about the course fee a bit. Bhavneet, you're not audible. 50% of the program that we are running are government sponsored. So candidate does not need. I'm not audible. Am I audible now? Yes, you're audible now. Am I audible now? Yes, yes. फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से 50% ऑफ द प्रोग्राम्स आर फ्री फॉर द कैंडिडेट्स। उनके लिए गवर्नमेंट हमें पे करती है, एंड गवर्नमेंट कैसे पे करती है? देयर आर कैटेगरीज ऑफ ईच कोर्सेज, कैटेगरी 1 2 3 डिफाइंड इन कॉमन नॉर्म्स, उसको कहते हैं कॉमन नॉर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सो उनके हिसाब से पर आवर के बेसिस पे गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड अ पर्टिकुलर फीस फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स व्हिच विल बी गिवन टू द ट्रेनिंग पार्टनर, जो कि है एवीपीएल इंटरनेशनल। सो 50% ऐसे वर्क करता है। फॉर 50% अदर सेगमेंट्स लाइक हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, हमारे अदर स्कीम्स हो गई जैसे पेड डिप्लोमा कोर्सेज हो गए आईटीआई के, उसके लिए स्टूडेंट विल डायरेक्टली पे अस, एंड उससे पेड आईटीआई कोर्सेज के लिए एक कैप है, अपर कैप ऑफ 18,000 फीस। तो उससे ज्यादा हम चार्ज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दैट मैंडेट, चाहे हम कोई भी कोर्सेज चलाएं। And in that cap also we are running courses like drone technician and drone pilot, which are very expensive courses. Okay, great. Any, before we end this presentation, anything you want to add, Mr. Gaurav? I would like Gaurav, to. Gaurav, do you want to add anything before we end this webinar? Yes, I'd like to give my closing remarks after having heard from Bhavneet and met with their board of directors, right, Amit and Preet. I have all my 100% confidence that this brand is going to excel, and the way they've designed their business model, the way we have
build their connects, and the kind of model which is PPP. I am seeing it for the very first time in last a year or so under the umbrella of Franchise India portfolio brands. So this is actually a worth an opportunity for all our investors and our team members to actually get leverage. Let's get set the ball rolling and start aligning meetings, because we have only a handful of opportunities in the ITI and the polytechnic space because it is driven by the government policy. We cannot have more than that. So we only have about 17 odd ITIs and 2 polytechnics where people can become our franchisees. So very limited time is available for us, and it is a seasonal business. So we are looking at basically building up our franchise network for these 20 centers that we have readily available with infrastructure already there, and company giving all the confidence on the operations and a 100% minimum guarantee on the capital invested. So nothing great can actually be available with us in this kind of an opportunity. So good luck to everyone. Good luck, Bhavni. Thank you so much. So for one-on-one discussion and to reach us, I have already given our phone number and our email ID in the chat box. Please reach us through the same. We are looking for franchise. We are looking for partners who are really looking to tie up with a project which is really upcoming and backed by government. So this is also for the good of farmers and our villages where we are doing lot of good activities. Before we end the call, we are again coming back with an international brand opportunity tomorrow at 12 p.m. Till then, stay tuned. Thank you, Mr. Bhavni. Thank you, Gaurav, thank you, Shweta, for your presence and for your valuable time.